Good evening, friends. Welcome to WICCI Wellness and Wellbeing Council, Gujarat. I hope I'm audible. I'm Prerna Vaswani, State President of WICCI Wellness and Wellbeing Council, Gujarat. First of all, I would like to introduce about WICCI. WICCI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, it's a global free platform and it consists of more than 5 lakh members across 150 plus countries. WICCI boosts women entrepreneurs and businesses by collaborating with different people, organizations, government, etc. Along with that, we are interconnected with different platforms like All Ladies League, Women Economic Forum, and She Economy. It's founded by Dr. Harbeen Arora ma'am. With our great collaboration with WICCI Animation and Entertainment National Council and Apni India Gali, we start our today's session on World Environment Week special. It's my privilege to introduce a Wonder Woman, Miss Sonal Pareek ma'am. She is from Mumbai and she is an artist. She is life coach. She is an entrepreneur and she is actively working towards environment conservation. Her expertise lies in creating beeswax candles that has. Hi, Welcome, am Sonal I ma'am. audible? Yes, Thank ma'am. you. Good evening. Good evening. So I was introducing to our audience about you that you are just a Wonder Woman, and it's my privilege to share a stage with you. Every woman Yes, is a Wonder Woman. yes, perfectly said, ma'am. तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि शी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीज वैक्स कैंडल्स. बीज वैक्स कैंडल्स ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत ही बेनिफिट करते हैं. वो जो है एयर प्यूरिफाई करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को जो हार्मफुल रहते हैं उनको वो जो है बेनिफिट करते हैं और जो हटाते हैं. तो मैं जानना चाहूंगी कि ये धरती माँ जैसे कहते हैं एनवायरनमेंट. आजकल जो हम लोग काफी हेक्टिक शेड्यूल्स में रहते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं. यहाँ पे हम लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं बट धरती माँ का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है जो हमें एयर दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, फूड दे रही है, सब कुछ दे रही है. तो मैं जानना चाहूंगी कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है वन अर्थ वन चांस लेट्स सेव इट. तो आप अपने बारे में प्लीज बताइए कि आपने कैसे जर्नी स्टार्ट किया और कैसे कैसे आप स्टेप्स ले रहे हैं मैम आजकल. So, actually, during the pandemic, ये मुझे यस. स्ट्राइक हुआ because ऐसे तो I'm a housewife. So I would like, it's a full-time job. I used to enjoy taking care of my children, raising them. But during the यस. pandemic, I happened to realize that, you know, because जो sudden जो चीज हुई उसके बाद मुझे समझ में आया वैल्यू ऑफ लाइफ. एंड आई रियलाइज कि हम लोग इतना कॉटअप हैं अपनी मटेरियल ग्रोथ में और दूसरी चीजों में कि वी आर नॉट इवन थिंकिंग कि इन अ मोमेंट एवरीथिंग जस्ट फेड्स अवे. तो व्हाई नॉट डू यस. समथिंग. अब कुछ जो पुरानी हमारी, बिकॉज एट दैट टाइम हम लोग को रीड करने का भी टाइम मिला काफी, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट टू आवर रूट्स. सो उस यस. वक्त मुझे फिर समझ में आया कि हम लोगों को, आई थिंक वी शुड try to revive and adapt our old lifestyle. थोड़ा बहुत, it's not possible totally because life, यस. time keeps changing. तो according to the change of time, हम जो कोई भी अपनी habits revive कर सकते हैं, जो कोई भी अपनी चीजें inculcate कर सकते हैं, उनको हमको वापस से adapt करने की कोशिश करनी चाहिए. During that
यस I also had, COVID in the first wave में. तो उसके बाद में मुझे, because I already had issues, lung issues and all, but उसके पहले मेरे 4 साल से I was totally good because of I used to do a lot of meditation, spiritual healing, yoga and all that. तो काफी ओके 4 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ था. But when this happened, again, वो immunity imbalance होके होना हो जाता है. तो again, I started feeling weak. बहुत जल्दी जल्दी infections हो जाते थे. So I started searching कि there has to be, because nature has cure for everything. So why not यस think about it? Why not find out कि इसका और क्या हो सकता है? So at that time, besides some, indoor health plants, I came across this fact about beeswax. कैंडल्स तो ऑलरेडी इन मेकिंग है ही, बट हाउ दे एक्चुअली बेनिफिट. तो वो चीज जब मैंने देखी एंड आई लाइक इट, तो all hit and trial and all research on Google and reading about it and trying it at home. Finally, I was able to create my own. I was able to establish my work. So at that time, so I used to just make and give to my friends in order to, unko, just यस to make people aware. Gradually, because I was encouraged by relatives and friends and family, so I got into full-fledged business. And this is not only that, besides, because like अभी अपन बात कर रहे हैं about environment, तो focusing on, छोटी छोटी चीजें, एक बार हम एक step बढ़ाते हैं, तो it's natural for everyone, धीरे 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 we start getting connected to various other aspects where we can make little, very tiny contribution also has huge impact. तो वो हम यस करने यस लगते हैं तो automatically it gets into the flow. And that's how I was able to take on one after the other things. I was able to acquire knowledge one after the other and then, take it to the community, help my family, and that's how it all started. ग्रेट ग्रेट टू नो मैम. अभी जो है आजकल काफी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, सब कुछ फास्ट पेस में चल रहा है. तो इंडिविजुअल्स को जो है ऐसा क्यों एक्शन लेना चाहिए टू सेव द अर्थ? लोग सोचते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी तो आ गया, सब कुछ आ गया, तो हम क्यों करें? तो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट कि क्यों हमें स्टेप्स लेने चाहिए? See, life तो no doubt थोड़ी रिलक्टेंट, थोड़ी लेजी, थोड़ी complacent हो चुकी है, People are so much यस used to the leisure और एक illusionary world में रहते हैं thanks to the social media. Although काफी कुछ information भी है, बहुत informations यहाँ से मिलती हैं, but thanks to यस the social media कि all the time हमारे phone पे उंगली scroll ही होती रहती है. We are just busy, most of the time is like invested in wanting to know यस what is happening in other people's life rather than focusing on what we can do in our life. Anyway, on the lighter note, it was like that. Now coming back to the thing. So we can't, everybody can make contribution by the only thing is that they need to create a better life for themselves. It's not about, um, how we can bring the change. When we change, then we become an example of change. That's all we can do. यस We can't यस force anyone. We can't, और youth तो आजकल intelligent है, no doubt, very intelligent. मगर somewhere that grounding is little missing abhi. And it's not about youth. I think everyone, because of the social media thing, most people are getting less grounded. तो वो इस वजह से वो connection to be able to make little more effort miss होता है सबसे. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है कि हम डस्टबिन में कचरा डालते हैं या डस्टबिन के कचरे को सेग्रीगेट भी करेंगे ना, उसमें भी यू विल फाइंड फैमिली पीपल फीलिंग लेजी. कौन झुक के डालेगा उसमें? जस्ट टेक्स 30 seconds more of an effort, but they feel so lazy in putting that, garbage in the bin directly. So that यस kind of fast life, that kind of laziness, that kind of let it be, चीजें होने लग गई हैं. But we can become an example. तो अपने यस लिए लाइक किसी को भी इन्वॉल्व करना है तो फर्स्ट वी नीड टू टेक द इनिशिएटिव. व्हेन वी गो अहेड पीपल जस्ट फॉलो अस, दे जस्ट जॉइन अस. अभी अपन ने ये शुरू किया है तो व्हाट वी आर डूइंग इट आउट ऑफ आवर ओन कंसर्न, आउट ऑफ आवर ओन choice. We have started it. If even if it impacts 2 lives, that is an accomplishment. We are not thinking how many people we are going to impact.
we're just doing our Yes. work. राइट Exactly. राइट डेफिनेटली. सो वही है कि कॉन्शियसनेस बढ़ाना है और अवेयरनेस बढ़ाना है. जस्ट अ स्मॉल स्टेप कैन क्रिएट अ मेजर चेंज. तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे क्या छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं टू सेव द एनवायरनमेंट? So I'll first I tell you, I attended a webinar about, these environmental protection tips. वहाँ पे थी. Many people were sharing many things. Dia Mirza was one of them. And as you know that Dia Mirza is an ambassador, UN ambassador Yes. for India. So she shared two things which actually inspired me. One is that it has been diagnosed, there has been, plastic has been detected in mother's milk. ओ. तो ये एक चीज थी जिसने मुझे बहुत मूव किया. और सेकंड चीज उन्होंने बताई कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स शी हैज बीन टेकिंग इन हर ओन लाइफ, लाइक स्विचिंग ऑन टू वुडन ब्रशेस. लाइक शी एक्चुअली गेव द काउंट कि we like kind of we were about 400, there were 400 people might be sitting in the auditorium at that time. So she just calculated कि 400 people changing their toothbrushes every week, then how many toothbrushes we are disposing, to how much amount of plastic we are disposing. And human beings have already, they have played and distorted two-thirds of the oceans, two-thirds of the water bodies, and three-fourths of the land masses. Already हम खराब कर चुके हैं. तो उसका impact तो हमारी generations देख ही रही हैं. So if we do not connect to this awareness, and if we do not develop and take this awareness forward, how much hazardous certain man-made products are, then our generations will have to pay for it, and we don't want that for our children. So when I heard her, that is the time I decided that I myself will become a change. When I will become a change, I will be able to impact lives. So अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी. My daughter was saying, let's start going for the walk early in the morning, pluck a neem dandi, and then brush our teeth with that. Let's go back to that original thing. I said, no harm. It might feel a little bit, weird in the beginning, but then it is a tremendous healthy habit. There are. Yes. So that's what, considering all these things, first and foremost, I declined uh, buying stuff in plastic bags. So I prefer carrying my cloth bag or a jute bag, and I usually buy stuff in a paper bag and not in the plastic bags. And if I do get them, then now that I've shifted in a new community, I'm going to start it here also. Otherwise, what I used to do is we used to collect. So in a community, when you collect it collectively, everybody contributes. Then you segregate all the waste that is gets accumulated in the houses, like plastic boxes आ जाते हैं, plastic bags होते हैं, milk pouches होते हैं. There are aluminium pouches, lot of different kind of waste. So you segregate it, and then उसको collect करके there are people who are recycling and making very good products out of it. Some of them are making, some of them are making beautiful mats and these bags, handbags and shoulder bags which we use, even the school backpacks. And some of them are making sturdy furniture. And either they are selling or donating, whatever they are doing, that's their business. But we are helping them. If we think कि अरे यार वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम क्यों इतनी मेहनत करें देने का, कचरा लेने वाले आते हैं ना, it's like that's the mindset we have. Yes. Yes. But it's not right. कचरा लेने वाले आते हैं, वो भी human beings हैं. उनको हम इतना टॉक्सिक कचरा क्यों दें? Why can't we just separate the wet waste of the kitchen, or washroom waste differently, और जो अपना vegetable peels होते हैं उनको differently. वेजिटेबल बीन्स को मैं उनको मेन्योर बनाने में भी जो अपना बनाते हैं घर में, मैं वो भी उसके लिए भी यूज करती हूँ. बट हम जनरली क्या करते हैं, वी गिव इट टू द गार्बेज कलेक्टर एंड वी रिक्वेस्ट हिम कि ये सेपरेटली लेके जाओ, प्लीज फीड इट टू द काउ, और वी गिव इट टू आवर हेल्पर्स कि प्लीज फीड इट टू एनी काउ दैट यू कम अक्रॉस. बिकॉज इंडिया में तो we can say we are fortunate enough that we find cows everywhere, so we can easily Yes. feed Yes. them, Yes. I feel वो अपनी अबैंडेंड होती है, भूखे रहते हैं, तो कुछ नहीं, डॉग काउ किसी को भी आप फीड कर दो फूड, व्हाई वेस्ट Yes. इट. Yes. एंड another thing that indoor plants, that also I started, and then I started about
अभी ये शुरू किया ही है, लाइक विद अ बंच ऑफ पीपल, एंड आई होप टू टेक इट फार, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम यस, लोगों के बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, तो of course enjoy whatever way you want to enjoy, but we can do one little philanthropic act, and that is plant the fruit tree. If you plant it outside your house or on the any side of the lane or wherever you feel like, where it, you know, that, and where you can take care. So when that plant grows, and I have even come across people saying, अरे हमारा क्या फायदा है? तो मैंने कहा ऐसे सोचा होता ना तो हमारे पास भी पेड़ नहीं होते, हमारे पास क्या सही, फायदा है? तो why don't you think कि आप अपना इतनी एनर्जी, लव एंड अफेक्शन के साथ उस पेड़ को रेज कर रहे हो, that tree grows big and start bearing fruits, and then passers by वो चाहे अपना खा लो या उसको, you know, the poor people, underprivileged people can collect them and just sell them off, earn some money. So, in a way, whatever little good we can do through our life, there is no harm in doing. And it gives us so much of pleasure कि एक अच्छी एक्टिविटी होती है कि आज किसी की डेथ एनिवर्सरी है, किसी की बर्थ एनिवर्सरी है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, यू नो एनीथिंग, अपना बर्थडे है, कुछ भी है, वी आर डूइंग सम गुड थिंग, और इट ऑल्सो इट कनेक्ट्स अस, और सबसे अच्छा होता है इट इंस्पायर्स द कमिंग जनरेशन. जो भी हम यस, आज करेंगे ना, in our generation, we are setting an example and inspiration to our younger generation. So this is all I started doing. Even, और इतना कुछ, you know, इतना कुछ information is available on social media. We can make good use of that information and really create a change. Whatever little bit you feel interested. So whatever my interest was, I started doing. Still in the process of learning. Lot to do. यस, यस, डेफिनेटली। वेरी नाइस टिप्स यू हैव गिवन मैम। एक एक्चुअली एक मेरा ये भी ड्रीम था, जैसे आपने फ्रूट ट्रीज बताया तो मैं भी काफी सालों से देख रही थी और मैं काफी सालों से सोच रही थी कि फ्रूट ट्रीज के बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि जनरली मेरा ऑफिस जो है काफी दूर है, तो मैं जाती हूँ आई एम सीइंग दी ड्रम स्टिक्स ट्रीज। तो उसमें जो है वेरी सैडली से कि ड्रम स्टिक्स जो है बेचारी सूख जाती है, देयर इज नो वन टू पिक इट अप, या फिर जो है गवर्नमेंट ने अगर ड्रम स्टिक्स के ट्रीज लगाए हैं लेकिन नो वन इज एबल टू यूज इट। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रम स्टिक्स मैं रोज देखती हूँ, लेकिन मुझे काफी बुरा लगता है कि ये कोई यूज ही नहीं कर पा रहे, इट्स ऑफ नो यूज। तो और दूसरे अमलतास के भी ट्रीज देखती हूँ, लेकिन वो भी कोई यूज के नहीं दिख रहे हैं। और जनरली देखा गया है कि ट्रीज जो भी प्लांट हो रहे हैं उसके तुरंत आजू बाजू जो ट्रंक है उसके आजू बाजू रोड बना दिया जाता है, तो हाउ इट विल ग्रो। तो मुझे Hmm. यही गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट था कि एटलीस्ट कीप अस सम स्पेस ट्रीज, और थोड़ा जो रोड है उसके बीच में एटलीस्ट वन जो 1-2 इंच का जो है एटलीस्ट थोड़ा गैप दिया जाए उसको ग्रो करने के लिए। नहीं तो फिर वो डैमेज हो जाएगा, वो गिर जाएगा, इट्स ऑफ नो यूज। तो वो That's जो what है I said. That within the city ही की, क्योंकि I have not thought about all that. मैं तो within city की ही बात कर रही हूँ कि सिटी में भी आप अपनी लेन के आसपास कुछ अच्छे लगा लेते हो तो it helps the यस, residents, you know, of the city. यस, जो यस, underprivileged डेफिनेटली। people होते हैं. Like when I see my house help, अभी हमने उसको ऐसे ही बोला because it's very hot in Rajasthan. तो we just bought a packet of Glucon D, हमने उसको बोला तुम पी के निकलो घर से, इससे तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी. तो एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग हाउ ट्रेजिक, इतनी हीट में ये आ रही हैं, काम कर रही हैं, सब है, अगर इतना कुछ रास्ते में ही अवेलेबल हो तो दे कैन ऑल हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, यू नो. हस्बैंड यस, के पास काम नहीं होता है तो मतलब काम, वर्क से, इट वाज जस्ट अ थॉट. आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बट आई फील दैट यस, जो आपने बोला है, यस, ये पॉइंट है, एंड यू कैन, यू नो, nail it, or you can post it on some group, social media group. यस, यस, डेफिनेटली। एंड अभी जो है एयर पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है, इवन ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी काफी हो रही है, तो ऐसे कोई प्लांट्स हैं जो एयर पोल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं हमें? You know, fortunately, plants are the best healers. और CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है कि प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. अब आप सोचिए कि ये जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, आई थिंक एवरीबडी, ऑल द यू नो, ये जो हमारी जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं,
the residents of the buildings, they should take the responsibility कि कैसे इतने flats अगर बने हैं, इतने air conditioners चल रहे हैं, like on an average if you take minimum 3 air conditioner तो every flat में चलता ही है, right? Minimum 3 ACs होते हैं, और स्पेशली इन द हॉट एंड एरिड एरियाज तो काफी यूज होता ही है वो। तो अगर इतना ज्यादा पोल्यूशन उनमें से निकल रहा है, देर आर अबाउट बड़ी बड़ी बिल्डिंग सोसाइटीज बनती, तो देर अबाउट 200-300 अपार्टमेंट्स। मैं जिसमें रह रही हूँ देर आर 46 अपार्टमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक देर आर 30 रेजिडेंट्स हु आर यूजिंग दीज अपार्टमेंट्स। तो इतना कुछ जब उसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड हीट जनरेट होती है, इट डज अफेक्ट। हम जो आज क्यों ड्राइवर्स के लिए क्यों पोल्यूशन का, एंटी पोल्यूशन का हमको स्टिकर लगाना जरूरी होता है, दे आर चेक्ड रेगुलरली बिकॉज इट डज कार्बन फुटप्रिंट्स का तो करना ही रहेगा, बट एज as normal human beings, we can't do as much as the governments and the mobile, automobile people. They are doing their own things. अपने researches चल रहे हैं, साइंटिस्ट अपना कर रहे हैं, वो उनका काम है। मगर हम as you know as lay people, we can at least do one thing, that we can plant more and more trees. That is the best we can do. And there are certain plants which are very friendly with this 24/7 oxygen release करने का उनका function है, and they are very friendly to these appliances. उनको they can be considered friendly plants. So why not plant more of them? इवन इंडोर इनसाइड में भी हमारे जैसे गैजेट्स होते हैं, इन एवरी हाउस होल्ड 4 लोग हैं तो 4 आपको लैपटॉप मिलेंगे, 4 सेल फोन मिलेंगे। इनफैक्ट एवरी रूम हैज टेलीविजन दीज डेज, ये भी है। Yes. तो फैमिली हुई ना, फैमिली के नाम पे आई वी हैव ओनली वन टेलीविजन, बिकॉज माई सन ऑफन कीप सेइंग कि मेरे कमरे में एक टीवी लगाना है। मैंने कहा एक ही बचा है, एक कमरे साथ में बैठने का एक तरीका है, उसको रहने दो। Otherwise, everybody keeps sitting in their own rooms with their own gadgets. So the thing is, Yes. itna although that radiations are not so toxic, but electricity की भी अपनी होती है, सबके रेडिएशंस निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो ये सबका कलेक्टिव इफेक्ट not exactly recognized as such till now, but I feel that every kind of energy has impact on human beings, on living beings. सब पे होता ही है, तो why not keep your environment, the inside of the house, surrounded, not surrounded, but often, like मेरे तो like I show you here, in every room I have many plants. बिकॉज आप कहीं भी बैठते हो, गैजेट्स के लिए भी whatever radiations are released, these plants, they thrive. In fact, they thrive. They're very friendly to human beings, so they absorb all of these radiations, even if they are mild. तो हमारे लिए काफी अच्छा है, and then they purify the air. You won't believe, some of the plants, they have the ability to, make the particles heavy and settle them down on the ground. So that way they do not impact our, वो air के साथ हमारे lungs में इतना नहीं जाते हैं. So that's how they purify the air. There is a lot of information. It's just a matter of taking the initiative, developing that passion to make some change, to contribute in some way, or if not to somebody else, for your own self, for your own family, for your own children. हम अपने लिए भी करेंगे तो भी we are making a huge contribution. राइट राइट। सो जैसे आपने बताया कि मोबाइल तो आजकल 24/7 फ्रेंड बन चुका है हमारे लिए। उसके बिना तो Yeah. दुनिया ही जैसे अधूरी है, इंटरनेट के बिना बिल्कुल दुनिया अधूरी है। तो जैसे आपने बताया कि प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस द रेडिएशन, तो ऐसे कोई 1-2 प्लांट्स के आप सजेशन दे सकते हैं कि जो वी कैन कीप Lots of इंडोर plants ऑल्सो, और जो commonly available plants हैं, like snake plant होता है, peace lily है, and ओके this bamboo palm, that is very good, bamboo palm, वो ओके रखना चाहिए। Then areca palm है, there are lots of plants and lots of information। क्या होता है, locally availability पे depend करता है, depending on different climatic regions, the availability of the plant differs। तो अपने climatic region के according we can find out
कि क्या हमको लोकली अवेलेबल है, बिकॉज द प्लांट ऑल्सो नीड द राइट काइंड ऑफ वेदर एंड कंडीशंस, टू बी एबल टू यस, ग्रो यस। प्रॉपरली। तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करके वी कैन यूज दैम। राइट, राइट, डेफिनेटली। एंड जैसे अभी आजकल जो है प्लास्टिक वेस्ट काफी बढ़ गया है, तो इसको रिड्यूस करके रिसाइकिल करना है। और जैसे अभी कंपोस्टिंग इज ऑल्सो हम्म। अवेयरनेस इज ग्रोइंग राइट नाउ। तो कैसे हम लोग जो है इसको सेग्रीगेट करके और कैसे हम सिंपल वे में हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लाइक आई ऑलरेडी शेयर्ड, मैंने तो यही किया था कि अपने ही बालकनी में आई वाज यूजिंग द लिटिल बिट ऑफ किचन वेस्ट मैं उसमें यूज करती थी, लिटिल बिट ऑफ मैं दे देती हूँ कि लाइक आप फ्रूट पील और कहीं मैं इनको दे देती हूँ। आजकल तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग विच पीपल आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट आई एम गोइंग टू ट्राई कि विनेगर में लाइक ऑरेंज की पील्स एंड लेमन की पील्स आप डालते हो, and then not exactly because I've not tried, so I do not know the exact process, but I'll try, and that becomes a natural ये जो लाइजॉल के जैसे उसके जैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नेचुरल फिनाइल काइंड ऑफ थिंग। You just mix a little bit of it in the water and then you mop your floor. So it's a good flooring detergent, floor cleaning detergent. And also, अभी जैसे हमारी जो इधर भी नई वाली हमने बिल्डिंग ली, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ म्युनिसिपल गार्डन क्लोज बाय। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं अपनी इस कम्युनिटी में आई रिक्वेस्ट द पीपल दैट दे कैन कलेक्ट द किचन वेस्ट जो भी अपना है, वेजिटेबल्स का पील्स एंड ऑल, and we can give it to the gardener also close by, and he can create a he can dig a hole and then उसके अंदर वो रेगुलर डालता जाएगा, तो उसके वहां के प्लांट्स के लिए भी एक अच्छा कंपोस्ट तैयार हो सकता है ऐसे। सो दैट इज वन वे। एंड अबाउट द प्लास्टिक थिंग अगेन, वही चीज है, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर रियली वर्किंग हार्ड। They are, of course, they have done a business, but then really grateful to them for finding out a solution to recycle waste and create their business. They are contributing through their living, they are contributing in a very beautiful way, very meaningful, significant way towards this recycling of plastic waste. अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था विच आई रियली लाइक। इंडिया में तो देखो हम we get a lot of advantage of giving away clothes. There are a lot of people who जिन्हें हम दे देते हैं कपड़े वगैरह to use हो जाते हैं. But in many of the countries, a lot of clothes are bought and they are disposed. तो वो भी एक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है. And उस वेस्ट को, but there is a person somewhere in Germany, I think, who is recycling it to make bricks. वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा ये तो कितना अच्छा काम है। पीपल आर रियली वर्किंग। अभी आप देखिए कितने तरीके के ऑर्गेनिक लेदर बनने लग गए, फ्रॉम कैक्टस, फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम कोकोनट। पीपल आर डूइंग गुड, they are doing bigger things, we can do little things, but we can also यस, यस। create an impact on the environmental changes. यस, यस, वेरी ट्रू। जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो हम लोग भी ऐसे मिल मिल के जो है सागर बना सकते हैं, और जो भी एनवायरनमेंट के लिए करना चाहिए वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है अवेयरनेस आ रहा है, और लोग जो है दे आर गोइंग टू बैक टू द नेचर। जो नेचर ने Yes. हमें दिया है, हमें नेचर को वापस देना चाहिए। सो Yes, it is our कुछ debt. और। यस। सो आई होप कि सभी ऑडियंस को कुछ ना कुछ काफी टिप्स मिले होंगे, इंसाइट्स मिले होंगे कि एटलीस्ट दे कैन डू समथिंग फॉर द नेचर, फॉर द एनवायरनमेंट, टू सेव द अर्थ। तो जैसे Hope so. बैम्बू ब्रश का आपने बताया, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस। और दूसरा जो है, मैंने दूसरा आज ही इनिशिएटिव, आई कैन से कि आज ही इनिशिएटिव लिया कि बिना सोप के बदले मैंने आई यूज एलोवेरा जेल टुडे। तो अच्छा, ओके। इट वो काफी मुझे रिफ्रेशिंग लगा। इट वाज अ न्यू ट्राई फॉर मी आल्सो, कि मैंने सोचा लेट्स ट्राई, क्योंकि एलोवेरा जो है टचवुड मेरे घर पे आजकल बहुत ब्लेसिंग की तरह बढ़ रहा है, तो काफी ग्रोथ हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई कर लेते हैं, कि चलो सोप नहीं यूज करके मैं एक बार ट्राई करती हूँ यूजिंग दी एलोवेरा जेल, नेचुरल एलोवेरा जेल, जो मैंने डायरेक्टली प्लांट में से निकाला और उसमें से मैंने रब करके और मैंने ट्राई किया।
फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही सूदिंग लगा मुझे. इट वाज आई एम रियली फीलिंग फ्रेश एंड कूल, आई कैन से, कि आजकल काफी गर्मी है, बट रियली इट फेल्ट मी वेरी नाइस. तो आई थिंक कि ये भी आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं. एवरी ऑडियंस कैन ट्राई द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, जो हम लोग ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. सो एनी फ्यू अदर टिप्स यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस कि कैसे अब छोटे आपने छोटे बात चेंजेस की है करके. तो हाँ, आपने बात की है तो मैं बता देती हूँ आपको कि यस. बीeswax तो मैंने आपको बता ही दिया है बिकॉज आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिस in the market, यस. these candles. But now I am going to launch my Kite skincare products. So Kite ओके. it means original, organic, authentic. And ओ. this is the range of because आपने जैसे एलोवेरा का बोला तो क्या है कि in today's fast life, especially the youth who are working, it's difficult for them to daily prepare करना बनाना and all that. So I यस. am starting this thing where I am there are जैसे मैं I make rose water तो मैं सन ड्राइड मतलब मैं पूरा उसका डायरेक्ट एसेंस निकालती हूँ धूप में करके. ओके. It is extremely beneficial. Extremely. I use honey directly taken from honeycomb, not bought from the market. ओ. तो वो चीजें ऐसा नहीं कि हनीकॉम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, फार्म हाउसेस भी होते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ अगर आपको करना है कुछ काम और आपने बोला है कि ऑथेंटिक करना है तो यू हैव टू बी ऑथेंटिक. Yes. यस. So, मतलब it satisfies you, your soul, your heart that you are actually true to your word. So very soon I'm launching it. और पूरा जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे उनका दे आर ऑल collected from organic farms, washed, hand washed here घर पे, sun dried, properly done, very well taken care, तब totally hygienic, easy to use, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है. उनकी पैकिंग भी टोटली ऑर्गेनिक पेपर पैकिंग है, नो ओ. प्लास्टिक. बिकॉज व्हेन आई हर्ड दिया आई रियलाइज जो भी हमारा पैकेजिंग आता है जैसे हाँ अपन भूल जाएंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कोल्ड ड्रिंक्स वाटर बॉटल्स जूस की ड्रिंक्स वगैरह हम यूज करते हैं बिकॉज इतनी हीट होती है और एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैचिंग होती है इन बॉटल्स की और इनकी. तो क्या होता है कि प्लास्टिक that we can't see it, but these plastic particles are released in the liquid. And when we drink the liquid, we are actually intaking those plastic particles. That is the reason, or through air, हमें पता भी नहीं चलता है because packaging has become, packed food has become an essential part of our life. Or packing is not always so good. Very few companies go for good quality packing. So that's why वो चीज impact कर रही है हमारी health को in lot of ways. Another thing, I would like to, so मैंने तो बिल्कुल बंद कर दिया है. मैं तो I'm totally against buying any of these things. So when you're going out, carry your own bottle, carry your own liquid, ड्राई पाउडर लेके चले जाओ अपना किसी कंटेनर में उसमें पानी डाल के बना लो. One has to work towards one health. We have to take the responsibility. Secondly, I realized कि I just want to share a very important thing. 120,000 DNA mutations every day होते हैं human beings में. And these DNA mutations कहते हैं ना आपका जैसा आप every moment we have a choice कि हम अपनी लाइफ में क्या चेंज ला रहे हैं गुड और बैड. हम जो चेंज लाते हैं वही मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में होता है. So these 120,000 DNA mutations are impacted by everything. The food that we eat, the environment, the air that we breathe, the environment that we live in, the kind of thought process we have, the kind of people we are surrounded by, the kind of stuff we read, the kind of stuff we watch, the work that we do. Even छोटी छोटी चीजों हमारी वर्क हैबिट्स में सब में काम आता है. तो again, not just don't think like I'm promoting anything. I'm again just leaking an information about beeswax. When you are meditating, this or not, I use beeswax in washrooms also. I burn the candles 20 minutes morning and evening in wash area because it kills the germs. It releases negative ions, or no other wax does that. Only the beeswax does it. ये negative ions release करता है जो सारे bacteria, viruses, any kind of
infectious particles around or any kind of unhealthy particles around, उनको ये heavy कर देता है, उनको bottom पे settle कर देता है, like some of the plants. तो plants इतना इफेक्टिव, प्लांट्स का स्लो होता है प्रोसेस, यू नो, इट दे Yes. आर 24/7 दे आर देयर इन द रूम, तो अपने स्लो प्रोसेस उनका चल रहा है, बट दिस एक्सलरेट्स द प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि वाइल मेडिटेशन व्हेन वी आर यूजिंग इट, व्हेन वी आर बर्निंग इट, क्योंकि हमारे इट इज, I don't have the proof of it, but it is believed in our culture that it enhances the activity of the pituitary gland, functioning of the pituitary gland. So it enhances our creativeness, our innovation, our intuition, or we use it, in my family we use it, and it really helps. It has helped us. I'm out of that any kind of bronchial infection now. I have healthy lungs. I can, I'm 57, but when I do my activities like are like 40-year-old. So, and I wasn't like this earlier. I have changed myself through my thoughts, through my actions, and through my desire to stay young and active, even at the advanced age of 90. So that's my target. So obviously, I have to work towards it. So this, Yes. all these little things, they really help you in. Plastic को तो I think, we should say a complete no to one-time use of plastic. ये ऐसे तो इट्स एन इन inseparable part of our life, जैसे गैजेट्स का है, प्लास्टिक भी हमसे अलग नहीं हो सकता है, इट इज एन एसेंशियल मटेरियल, बट वन टाइम यूज प्लास्टिक इट शुड बी अ कंप्लीट नो नो। फूड प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मत रखिए। जहाँ पर आई मेड माई किचन 90% फ्री ऑफ प्लास्टिक, जो 10% बचा है उसको भी मैं हटा दूंगी। ये ग्रेट, ग्रेट टू नो दिस। बीज वैक्स कैंडल्स इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है, आज मुझे पता चला। इट्स टोटली न्यू फॉर मी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई इट। कैन यू शो सम पीपल आर बीज नॉट वैक्स अवेयर। कैंडल्स? I have two samples here with me. See, this is like Okay. whenever I have any get together or anything. So in giveaways, I always use sample candles they with you some Okay. like this is a Great. bookmark made by my daughter, and this is the candle. Okay. Okay, and Great. otherwise like this kind of jars. This is the black colored wax. Of course, I use, and every single color and the essential oil, they are all organic. I do not buy any Okay. color or any essential oil unless I'm sure that the seller is completely authentic and organic. So Wow. because Great. after all we are going to inhale it, तो हम क्यों कोई भी chemical synthetic चीज inhale करें? And Definitely. plants का तो इतना amazing है कि हम जो जैसे blow dryer, microwave, refrigerator, and even like हमारे कुछ cosmetics होते हैं which we use, or like hair पे बालों पे लगाने के लिए कुछ भी हम hair dye or any kind of gel which we use, they release certain chemicals, certain fumes, उनको भी plants absorb करते हैं. So plants are very good friends. Great. Great. Oh, And if we want to order these beeswax candles, how we can? It's available on Amazon platform or something, any platform, or we have to directly order. I haven't registered on Amazon, but I am going to this week. Yeah. I was Great, doing it great. locally. I was taking, I want to share something very important. I had Yes. visited a store and I just asked him that if he would showcase my candles. So for him also, it was a new thing. I explained it. That is where I came to know about, incense sticks. And I was like, we were really taken aback how much cheated we are. He said there are certain factories where he visited because he might be knowing somebody, so how he got the chance to visit, I don't know. But he said, I visited those factories and he found that they were beating the old used tires to powder and then mixing that powder with glue and the fragrance and then making incense sticks out of it. It is so Oh, hazardous. We cannot imagine that we are burning an incense stick for puja thing and we are inhaling the same, the microparticles of plastic, all the synthetic stuff we are inhaling.
That is why so many people become allergic to incense sticks. सो जो ओके। हमारा पुराना कल्चर था ना, बर्निंग धूप, वो गाय का यस गोबर यस है और यस। उसमें लोबान है, कैम्फर है, घी है, ये सब डाल के जो हम धूप बनाते हैं, वो अगर हम जलाते हैं, फ्लावर्स, ये यूज ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, उनको मिक्स करके मैं तो घर में ही पाउडर बना के रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा बर्न कर लेती हूँ, उसमें लोबान है, कैम्फर है, सब थोड़ा मिक्स किया, उस पाउडर को बर्न किया, जस्ट हाफ अ टी स्पून, and it just creates aroma in the house, as well as it just, the fumes, they purify the air. So we should do these little things to purify the air, because घर में भी पूरा दिन बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं in various forms. यस यस। I'll ये share इंसेंस my स्टिक्स का link. आपने, You, डेफिनेटली hello? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई इट। Yeah, I डेफिनेटली आई have एम गोइंग shared टू my ट्राई link इट। with you. श्योर श्योर Thank मैम। you. यस। वही पता चला कि इंसेंस स्टिक्स भी इतने हार्मफुल हो सकते हैं, तो इट्स रियली डेंजरस, क्योंकि मेरे ब्रदर को भी एलर्जिक है, तो उसको भी फ्यूम्स नहीं पसंद है, वो तुरंत बोलता है कि बंद कर दो। एंड धूप स्टिक्स भी आजकल जो है डेफिनेटली इसी तरीके से उनका भी काफी assurance नहीं है. काफी स्मोक्स रहते हैं, कुछ एश्योरेंस नहीं रहता है। और काफी कभी कभी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो इट्स रियली आई कैन से कि इट्स आई ओपनिंग फॉर मी एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, कि इतने सारी डेंजरस चीजें भी मिल रही है रिलेटेड हाँ, टू पूजा ऑल्सो। तो एक्चुअली क्या होता है, वही चीज है कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचने लग जाती है, द काइंड ऑफ मैग्नेट यू बिकम, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द सिमिलर थिंग, सपोर्टिंग, उससे रिलेटेड. तो मैं यस गई थी अपने काम को प्रमोट करने और इंस्पायर होके आई, इंफॉर्मेशन लेके आई वहां से. डेफिनेटली डेफिनेटली। इट वाज वंडरफुल सेशन विथ यू मैम, काफी इंसाइट्स मिले, काफी सीखने को कुछ मिला आपसे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड आई होप कि जो भी ऑडियंस सुनेगी अभी लाइव है, जो भी बाद में सुनेंगे रिकॉर्डिंग, आई एम 100% श्योर कि उनको काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी अवेयरनेस मिलेगी। एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ जो है वो एटलीस्ट एक स्टेप तो वो अपनी लाइफ में लेंगे टुवर्ड्स द एनवायरमेंट सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। इट्स रियली वंडरफुल टाइम विथ यू मैम, एंड डेफिनेटली बहुत कुछ आपसे सीखना है और अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। तो आपसे ही सीखते रहेंगे। I'm और going to learn something from you. We are all here to teach यस each other. यस So, and यस यस। thank you for inviting me for this live. Thank you for giving me this थैंक यू सो मच opportunity. मैम, एंड थैंक्स टू सोनिया मैम ऑल्सो कि उन्होंने जो है Yes. हमें कनेक्ट किया, बीइंग अ WICCI काउंसिल मेंबर एंड शी इज अ स्टेट प्रेसिडेंट, ओ सॉरी नेशनल प्रेसिडेंट। तो काफी कुछ जो है लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है मुझे, और सबसे Correct, बात correct. करके काफी इंस्पिरेशन मिल रहा है मुझे। एंड फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। I'm surely coming with another expert with different topic. And take care. God bless you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.